आप भोपाल एमपी से हैं और आपने एलएलबी निर्मा यूनिवर्सिटी से 2022 में कंप्लीट किया है ना? यस तो सर कुछ पूछेंगे आपसे भोपाल एमपी राजस्थान आदि के बारे में। यस। और लॉ के सब्जेक्ट्स कौन से अच्छे तैयार ये बता दीजिए मुझे आप। सर मैंने सारे ही पढ़े हैं बट मेरा फेवरेट इंडियन पीनल कोड। इंडियन सर पूछें। भोपाल, यस। जयपुर को भोपाल से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे कौन सा है? सर इसकी मुझे जानकारी कितना नहीं। किलोमीटर होगा लगभग अंदाजन? सर किलोमीटर की नहीं है। इससे क्या आपकी जागरूकता चेक होती है, आप जी, यात्रा भी करते हैं, जी आए भी हैं, थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात होती है। जी, तो बिल्कुल। कितना मैंने 400 हाँ। किलोमीटर होगा? अराउंड सर आराम से 400 से 400-500। भोपाल एमपी और Yes. अपने यहाँ राजस्थान, ऐसी कौन सी 2-3 बातें हैं जो कॉमन है राजस्थान और एमपी में? कॉमन सर आई बिलीव डायलेक्ट, क्योंकि जो राजस्थानी भाषा है उसका जो स्क्रिप्ट है वो मोस्टली हिंदी से ही आती है, तो हिंदी भाषा दोनों में। आप राजस्थान के टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में बताओ, 4-5 जगह। सर एक तो जयपुर है, यहाँ पे हवा महल काफ़ी फेमस है, और जोधपुर भी काफ़ी टूरिस्ट प्लेस है। अनदर इज उदयपुर एंड रणथंभौर नेशनल पार्क, वो भी बहुत ही टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पर राजस्थान में जो मेजर फसलें कौन कौन सी होती हैं? क्रॉप्स, यस क्रॉप्स। सर मुझे इसका आइडिया नहीं है, सॉरी सर। अच्छा, एक अपन राजस्थान का ऑल ओवर वेब व्यू देखते हैं, मैप देखते हैं, यस सर। तो आप कैसे देखते हैं किस साइड में किस प्रकार का क्लाइमेट या कैसा है, मतलब जहाँ फिजिकल बोले फिजियोग्राफी, यस भौतिक प्रदेश कैसा है, किस तरफ पहाड़ है, किस तरफ मैदान है, रेगिस्तान है, ऐसा कुछ आपने देखा एक बार? यस सर। कैसा है आपको? सर राजस्थान वेस्टर्न इंडिया में आता है और काइट शेप्ड स्टेट है, और यहाँ का जो क्लाइमेट है वो मोस्टली समर्स यहाँ होते हैं, क्योंकि थार डेजर्ट है वेस्टर्न पार्ट में। अरावली रेंजेस इसे ईस्ट एंड वेस्ट पार्ट में डिवाइड करती हैं, तो यहाँ का क्लाइमेट मोस्टली हॉट रहता है बिकॉज ऑफ द थार डेजर्ट। यस। राजस्थान हाईकोर्ट की जो यहाँ जयपुर में और ऑल ओवर राजस्थान क्या स्थिति है, मुख्य पीठ कहाँ है, बेंच कहाँ है? सर राजस्थान हाई कोर्ट की प्रिंसिपल सीट जोधपुर में है, और इसकी एक बेंच जयपुर में है। अच्छा, इसका राजस्थान हाईकोर्ट का कोई कार्य क्षेत्र राजस्थान से बाहर भी है कि कुछ थोड़ा सा कहीं? नो सर, एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न इट इज नॉट। ओनली राजस्थान विद इन राजस्थान। अच्छा, गवर्नर कौन है राजस्थान के? सर मिस्टर हरिभाव किशन राव वागड़े सर। और लॉ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान? सर आई एम अनेबल टू रिकॉल राइट नाउ, सॉरी। श्री जोगाराम पटेल। यस यस लॉ मिनिस्टर ऑफ यूनियन? सर मिस्टर अर्जुन राम मेघवाल सर। एंड नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? सर नेक्स्ट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज ऑनरेबल मिस्टर संजीव खन्ना सर। चेयरपर्सन ऑफ नेशनल वीमेन कमीशन? सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट राइट नाउ। अच्छा, इसका मतलब आज का न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा? अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो है विच पर्सन्स आर कंसिडर्ड कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट? Sir, as per section 11, those persons who are not minor, who has completed age of 18 years, not of unsound mind, and not disqualified by law. These are the three persons. Okay. What are the two basic differences between fraud and misrepresentation? Sir, first of all, fraud is done with guilty mind, or we can say intentionally it is done, and misrepresentation is not willfully done, but it is done by mistake. Innocently. Innocently, yes sir. So this is the major difference. And there must be an intention to deceive in fraud, but yes. it is Not in misrepresentation. Good. What remedy is available in case of the anticipatory breach of contract? Sir, in case of anticipatory breach, the person can directly file for the breach of the contract. It is available directly as soon as the apprehension to breach is there, then he can file for breach of contracts. Also to continue the contract? Also to, yes sir. Okay. And what is the doctrine of frustration of contract? Sir, doctrine of frustration talks about whenever a contract has been made, but after that any supervening circumstances are created due to which the subject matter is destroyed, due to which the contracts becomes void. So both the party need not to perform it. Performance of contract becomes impossible or unlawful. Yes sir. Okay, okay. And what is doctrine of unjust enrichment?
Sir, it means whenever a person has been, the act is not done gratuitously, but the person has been benefited due to act of some other person, then he need not to take the benefit and he needs to restore it to the person who has given those benefits. Okay, what is the one basic difference between the proposal and invitation to proposal? Yes, sir. Sir, invitation to proposal means the party is ready to negotiate. It is just a act through which the other party is paid to give his proposal, whereas proposal is direct showing one's willingness to enter into a contract. So this is. सर पूछेंगे एविडेंस एक्ट से. एविडेंस अच्छा एविडेंस भी आपका फेवरेट था ना. Yes. आप पूछते हैं कि पहली बात तो आप ये बताओ कि एविडेंस और प्रूफ दोनों में फर्क क्या है. Sir, evidence are those things which are produced in order to prove certain facts, and proof मतलब होता है साबित, जिससे कोर्ट ये मान लेता है कि हाँ certain things exist. So this is proof, and the first thing was evidence. और ये अपने साक्ष्य की परिभाषा कहाँ है एविडेंस की. Sir, it is given under section 3 of Indian Evidence Act. And it means two things. First is the oral statement which the court allows or permits to be made before the court by the witnesses, and second are the documents which are produced for the inspection of the court. So these two are evidence. Whether bad character of the accused is relevant? Sir, it is relevant only when it is given in reply of the good character of the accused. Okay. What are the types of the secondary evidence? State the any two types. So secondary evidence are first of all the certified copies of the original. Second are the certified copies made through mechanical process and Not a compared- certified, a copy copy. prepared. Yes, sir. Copies Okay, good. and Under what circumstances secondary evidence is admissible? Any two circumstances. Sir, as far as I can remember, first is when the original is cannot be produced or it is in custody of the other party. Second is original is lost or destroyed. Okay. Under which provision the court can ask question in Evidence Act? Sir, can I take a moment to recall? I believe section 165 of India. Okay. When the court asks the question and reply has been given by a party or witness, whether adverse party can cross-examine the answer? Yes, sir. The adverse party can only cross-examine when the examination in chief has been With leave of the court, not Yes. as a matter of right. If Yes. court granted leave, then it is possible. yeah. Last question from you. What are the two basic differences between patent and latent ambiguity? Yes, sir. Sir, the patent ambiguity are those which are apparent on the face of it, whereas latent are those which are not apparent, but it is visible or implied through the evidence or the documents. Sir. Okay. Now the major criminal acts have been changed. Yes, sir. What are the major changes in Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita when we compared with the CRPC 1973? Sir, first is the zero FIR has now been Introduced. codified. Yes. Sir. And second, the time limits has been placed in the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita for different types of procedure. What is the section 6A of the Citizenship Act 1955? So section 6A relates to the Assam Accords, and it says that those migrants who have migrated to India before the 24th From Bangladesh. Yes, sir. From Bangladesh to India before 24th March 1971, those can claim citizenship in India. After the January 1966 to the before the 24th. 24th. Okay. And whether that section has declared constitutional by the Honorable Supreme Court in one of the recent cases? Yes, sir. Recently, the Honorable Supreme Court has upheld its validity.